ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ consecutive terms of a series are equal, then the series is called GP, geometric progression। जिस सीरीज का consecutive terms का रेशियो समान हो, रेशियो ऑफ consecutive terms, एपी में पढ़े थे द डिफरेंस of consecutive terms, यहाँ GP में the ratio of consecutive terms। For an example, 2, 4, 8, 16 ratio second term to first term, T2 by T1, 4 by 2, T3 by T2, 8 by 4, T4 by T3, 16 by 8 are equal, सब equal है। Then 2, 4, 8, 16 are in GP, are in GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। Either it is in ascending form or it is in descending form. For an example, 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, so on, are in GP. It is in descending form, are in GP. 2 first term, 4 second term, 8 third term, 16 fourth term, 5th term क्या होगा, 25th टर्म क्या होगा, 51st टर्म क्या होगा, कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इस पर देखते हैं। सीक्वेंस इज AR square, AR cube, and so on. Here A is called first term, AR by A, that is R. The R is called common ratio. AP में पढ़ते थे common difference, यहाँ common ratio. A is the first term, R is the common ratio. Sequence is A, AR, AR square, AR cube, so on, I in GP. यह GP में है। The first term is, you can write it as A into R to the power 0. R नहीं है तो R to the power 0 कर सकते। इसको और हम बढ़िया से लिखते हैं, फर्स्ट को ले आते हैं। फर्स्ट क्या है, A into R to the power 1 minus 1. R to the power 0 is equal to 1, तो 1 into A है, और 0 को लिखे 1 minus 1, 1 ले आए फर्स्ट का। सेकेंड टर्म AR, यहाँ A भी है R भी है, लेकिन ये सेकेंड नहीं है, इसको हम लिख देते हैं A R to the power 2 minus 1. थर्ड टर्म AR स्क्वायर, A भी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R भी है, थर्ड ये नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं A R to the power 3 minus 1. First term A R to the power 1 minus 1. Second term A R to the power 2 minus 1. Third term A R to the power 3 minus 1 and so on. इसी तरह से, जिसको हम Tn के नाम से जानेंगे। A R to the power nth term तो n minus 1.
nth term का ये फॉर्मूला. फॉर एन एग्जाम्पल, find 41st term of series 2, 6, 18, so on. Here, solution. Here, A is equal to, first term is equal to 2. R is equal to, common ratio, second term divided by first term. 6 by 2 is 3. N is equal to, number of terms. कौन सा term? The 41st, 41. Therefore, T44, 41 is equal to A, R to the power 41 minus 1. A 2 into R to the power R 3 power 41 minus 1 the 14. 2 into 3 to power 40. It is the 41st term of this series. Sum to n terms of a GP, AR square so on. इस GP के n पदों का योगफल क्या होगा? Let S be the sum to n terms of GP. GP के n पदों का, इस GP के n पदों का योगफल ऐसा है. Therefore, S is equal to A plus AR plus AR square plus so on. Nth term, n पदों का, nth term, AR n minus 1. nवा पद AR n minus 1. n पदों का योगफल ऐसा है. इक्वेशन 1. अब 1 में R से मल्टीप्लाई कर दिए. 1 into R. S into R, SR. A into R, तो AR के सामने में लिखते हैं. AR into R, तो AR स्क्वायर के सामने में लिखते हैं. AR square into R, तो AR cube. And so on. ARn minus 2 into R, तो ARn minus 1. Plus ARn minus 1 into R, तो ARn. It is equation 2. One minus 2 we get. इक्वेशन अगेन तो साइन बदल देंगे. ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस हो. एस माइनस एस आर, एस माइनस एस आर इक्वल टू ए आर प्लस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस सो ऑन. ये कट से चला जाएगा. यहां पर बच गया ए, यहां पर बच गया माइनस ए आर एन. 1 माइनस आर इक्वल टू, यहां ए कॉमन 1 माइनस आर टू द पावर एन और एस इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. When R is, it is condition when R is a smaller than 1. When R is greater than 1, S is equal to A into R to the power N minus 1 upon R minus 1. -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए, ये हो गया
a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कंडीशन व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो जब प्रॉब्लम में r इज ग्रेटर देन 1 तो ये फॉर्मूला लिखेंगे a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जब r 1 से छोटा होगा तब लिखेंगे a r टू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसके लिए थैंक यू। अब इस पर प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में।